आज का topic I have already shared with you, all the topics that I am going to discuss. We will first start with thickness. Means जो लोग बोलते हैं ना thin film. Thin film, what is the thin part actually? Why it is called a thin? Then the next topic is vacuum chamber. Third one is pressure. How to create the pressure by means of pumps. And how to measure the pressure. इसके बाद कुछ टाइम मिले तो we will discuss about another topic, that is the mechanical characterization of minerals. This is the topic we will discuss. So coming to the first topic, जो thin बोलते हैं, we start with something. What is surface area by volume? If you take any material and you take the ratio of surface area to volume, basically you will get a dimension, inverse dimension. Is it? For example, sphere area 4 by r square divided by 4/3 by r. और मान लो you take a cube. Cube में surface कितना होता है? 4 surface. So you will only take the first surface, which is the sphere. मान लो cube लेते हो ऐसे. एक का साइड मान लो is r. Volume is r cube. And the top surface area is r square. इसमें भी देखोगे कि you will get something as 1 by r. इसमें भी 1 by r. हाँ r square. Proportional, exactly r नहीं होगा, it's proportional. So what is basically what is being inferred from this exercise is ये इसके अंदर जितने एटम्स हैं और सरफेस पे जितने एटम्स हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज है. मान लो 1% एटम्स आर एट द सरफेस and 99% atoms are inside the surface, the bulk. जैसे जैसे मैं इसका थिकनेस रिड्यूस करता हूँ, रिड्यूसिंग द थिकनेस, जो थिकनेस है दिस इज आर. So as I am reducing the thickness, what is happening is the concentration of atoms at the surface is increasing. तो जो 1% था पहले, जैसे मैंने साइज को रिड्यूस कर दिया, वो 1 से जाके ज़्यादा परसेंट.
let's take this example. Initially, suppose there was a cube. Although the cube was R is equal to say 1 millimeter. When R is equal to 1 millimeter, what was my S by V ratio? कितना था? 1 by R. 1 millimeter. तो कितना? Millimeter मतलब? That was minus 3. Now, if I change this to 1 say micrometer. So my S by R is by V will now be 1 by 1 micrometer. ठीक है? तो इन दोनों का मैं अगर रेशियो लूँ, what will be the difference? 1 by 1 millimeter divided by 1 by 1 micrometer. There will be huge difference. Each huge difference का मतलब क्या है? जो concentration of the atoms. जैसे मतलब मेरे पास 100 balls हैं, I have 100 balls in a certain region. As और इसका मतलब उसमें से 10 बॉल यहाँ पे, मतलब 5 बॉल यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और बाकी 95 यहाँ पे। कंसंट्रेशन कितना है? 5:95। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको साइज को मैं कम कर रहा हूँ। कम करते करते मैंने इसका साइज को साइज टू से initially ऊपर का तो एटम सेम है, only thing is that the lower atoms are reduced, so ये मान लो 40 हो गया, so my new ratio will be 5:40. तो जैसे जैसे मैं थिकनेस इसका रिड्यूस कर रहा हूँ, वैसे वैसे the concentration of atoms, the percentage of atoms at the surface is increasing as compared to the bulk. इसलिए क्या हो रहा है कि जो मेरा प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, दिस इज मटेरियल होल सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पहले डिपेंड करता था इसके ऊपर वॉल्यूमेट्रिक फ्री एनर्जी, जीवी फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिंस कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेस एटम्स इज इंक्रीजिंग, और जितना छोटा होगा तो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सो एट द सरफेस इट विल नॉट डिपेंड अपॉन फ्री एनर्जी। वॉल्यूमेट्रिक, and this is surface so the property will now be decided by the surface energy, right? Because the number of percentage of atoms at the surface has increased with reduction of size. Now you may ask, जब हम लोग बोल रहे हैं ना थिन, इसका कटऑफ क्या है? इसको कितने करोड़ बोलेंगे थिन और कितने करोड़ बोलेंगे? तो इसका आंसर है कि डिपेंड्स अपॉन व्हाट प्रॉपर्टी आर यू राइट। जैसे ही जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बल्क से डिविएट्स, तो नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है, जिस थिकनेस पे at T is equal to say 100 nanometers,
एंड लेस, बल्क से मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हम लोग कोई भी एक प्रॉब्लम, मान लो कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो फॉर दैट सिस्टम दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे कि 100 नैनोमीटर इज द कट ऑफ। लेकिन कंसिडर ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी और एनी अदर प्रॉपर्टी, उसमें देखोगे कि तो 100 नैनोमीटर में कम नहीं होगा, you to go to say 50 nanometers. So in that case you will say that 50 nanometers is my cutoff. So it depends upon which property you are trying to find. Was that clear now? Slightly clear? So it's basically surface to volume ratio. The nutshell, in film we are mainly talking about the atoms at the surface. So the surface to volume ratio is important because decreasing the thickness, the concentration of the atoms at the surface increase. That is why the total material becomes surface dependent or surface energy dependent. Okay? अभी हम लोग एक दूसरे एस्पेक्ट पे आ रहे हैं। Have you heard about this term? EOF. EOF stands for degree of freedom. Real space में किसी भी मटेरियल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 होता है, because it can move in 3 directions, x, y and z. Degree of freedom is 3 normally. लेकिन मान लो हम लोग अगर थिन फिल्म की बात करें, थिन फिल्म में हम लोगों ने क्या किया कि एक डायमेंशन तो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। पहले इट वॉज लाइक दिस, अभी हम लोगों ने इसको रिड्यूस करके वन डायमेंशन में रिड्यूस, इट्स लाइक दिस। फिल्म होगी, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो ऐसा देखो ना, घर के अंदर यू कैन मूव आइदर साइडवेज और अप एंड डाउन, लेकिन छत पे चले जाओ इधर मूव अप, राइट, आइदर मूव एक्स एंड वाई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF जाता है 2। इससे बाद थिन फिल्म्स आर आल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल मटेरियल्स। तो मैं अगर इसको F मान के चलूँ, F stands for degree of freedom. So initially F was 3 for bulk material, or I can call it as a 3D material, normal जो materials है। अभी F हो गया है ना 2 for pencil, which is a 2D material। और एक चीज़ तुमको जान के रखो, तो और डिटेल्स में प्रीवियस नेक्स्ट नए क्लास में पढ़ोगे। There is something called DOC. जैसे DOF is degree of freedom, DOC is degree of confinement. मतलब in how many axes we have restricted the movement. तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक एक्सिस को दबा दिया, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट इज 1। तो इसको हम लोग मान के चलते हैं, कॉल इट एज C।
So always remember always that F plus C is 3. Always. So if F is 3 here, in the first case, C is equal to 0. मतलब हम लोगों ने किसी भी एक्सिस पे we are not confined. लेकिन in the case of a 2D material, if F is equal to 2, then C is equal to 1. In one of the axes we have confined the material. तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है. Electron पहले moved in all the 3 axes. लेकिन on the surface it can either move this or that or something in between. इसलिए उसका degree of freedom हो गया तो degree of confinement हो गया. ठीक है? अच्छा. Now let us come to the fact that absence of air. Vacuum means absence of air. So there is a chamber. ठीक है. यहाँ पे उसको thin film बनाना है और इसके ऊपर भी उसको thin film डालना है. I will call this one as the substrate. और जिस मटेरियल का thin film डालना है, I call that one as the target or source material. ठीक है. क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया कि एक एक करके एटम्स दे कम वहाँ से एंड दे डिपोजिट एज अ फिल्म. यहाँ पे बैठते जाते हैं ऐसे ऐसे करके. एंड दे कैन accommodate in 3 different ways. क्या है? कौन कौन सा बेटा? एक है लेयर बाय लेयर, एक है आइलैंड और एक है लेयर प्लस. Now we require a vacuum to deposit the film because we don't want the air molecules to disturb the iron. इसके अंदर जो air molecules हैं, ये जो air molecules यहाँ पे हैं, ये भी है. वो नहीं चाहते कि जो air atom जब गिर रहा है वो सोर्स से नीचे की तरफ से बाहर आए. Yes, इसलिए we create a vacuum. By creating vacuum, what do we do? We reduce the other mean free path. Mean free path मतलब distance between two positions. So that the atoms they do not collide with each other. The collision of the gas molecules is not taking place. As the atoms are down. तो इसके ऊपर बेस करके लोगों ने एक पैरामीटर की लोगों से A is equal to lambda L. इसको बोलते हैं न्यूटन नंबर. Should be more than 1. What is L? L is this distance. This is the distance L. तो इसका मतलब क्या है? That lambda
is greater than L. It means it will not collide at least while traveling this distance. It will collide after that. ठीक है? तो ये reduced mean field बात करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा that I have to create a vacuum. There are different levels of vacuum. एक है normal vacuum, दूसरा है high vacuum, तीसरा है ultra high vacuum, और इसके ऊपर भी एक होता है extreme high vacuum. कितना वैक्यूम हुआ हम कैसे यूज करते हैं प्रेशर तो सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर $760 kilometers of mercury. इसका एक और एक नाम है, we call it as torque. तो मान लो 1 atm प्रेशर में we can say that इससे थोड़ा कम हो गया तो 10 to the power -1 torque create. That qualifies as being called as vacuum. 1 to 2. अच्छा 1 ही ले लो. Just basic initial. इसके बाद नेक्स्ट वाला जो वैक्यूम है और गैस नहीं निकलता है तो 6 ये वैल्यूज थोड़ा एम्बिग्यूअस है -5 -6 -7 -6 इतना टॉर अगर हो गया तो इट्स वी कैन कॉल इट एज हाई वैक्यूम. अल्ट्रा हाई वैक्यूम में 10 to the power से -10 मान के चलो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू होता है मतलब बेसिकली इसी रेंज में होता है. और ऑल इफ यू गो टू से 10 to the power -13 then we can call it as so what is actually happening is if you put it on the vacuum air pressure is getting down. Air pressure कब कम होगा जब नंबर ऑफ एटम्स कम. एयर मॉलिक्यूल जितना मैं हटा दूंगा उतना मेरे एयर प्रेशर घटते जाएगा. मॉलिक्यूल अच्छा कैसे मैं हटाऊंगा एयर प्रेशर? यूज ऑफ वैक्यूम पंप्स. So use vacuum pumps to remove the gas before the deposition actually starts. जो अलग अलग लेवल ऑफ वैक्यूम है इसके लिए अलग अलग पंप्स हैं. पहले तो अच्छा ये जो empirical say that why can we use that अच्छा let me first start with अच्छा normal simple vacuum करने के लिए जो पंप हम लोग यूज करते हैं that is called rotary pump.
हाई वैक्यूम बनाने के लिए वी यूज डिफ्यूजन पंप, अल्ट्रा हाई वैक्यूम बनाने के लिए वी यूज टर्बो molecular pump, और एक्सट्रीम हाई वैक्यूम बनाने के लिए यूज sublimation pump, iron sublimation pump, और बेसिकली टाइटेनियम, यहाँ पर आयन मतलब टाइटेनियम सब्लिमेशन RP, DP, TNP, and TSP. अच्छा, ये है कि इसका जो रेंज है वो वेरी करें। मान लो तो लिखोगे कि टर्बोमोलिकुलर पंप का इट इज यूज टू क्रिएट वैक्यूम पंप, -7, it depends, but really this is the hierarchy if you look. So let us first try to understand how do these work. पहले आते हैं हम लोग रोटरी पंप, RP. It is simple, it's very simple. इसका जो बेसिक डिटेल्स ड्राइंग नहीं करूँ, तो बेसिक है कि there is a rotator. वो क्या करता है कि गैस को यहाँ से सक्शन होता है गैस का from the chamber, suction, and exhaust. रोटेट करके रोटेट्स, तो ये मैंने एक ही रोटेटर यूज किया, वो जगह में 4 मल्टीपल रोटेटर यूज हो सकते हैं। टेक्स, दिस इज द चेम्बर, यहाँ से एयर सेट करता है यहाँ। तो इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज एज आई टोल्ड टू क्रिएट द बेसिक वैक्यूम V, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बेसिक वैक्यूम बनाना called as roughing. So from ATM, atmospheric pressure, say we are creating vacuum. This whole process is called roughing. R O U H I N. Roughing. This is the base vacuum. Without creating a base vacuum, you cannot create other vacuum pumps. This is the primary requirement. But we cannot use a diffusion directly from atmospheric pressure. इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक है कंटामिनेशन के कारण, जो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, इसमें जनरेट वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट. So this is the first step. Now we come to the next vacuum category. It's called DP, diffusion pump. Diffusion pump का जो basic जो idea है, they are using a chemical called silicone नहीं है, silicone. This PDM is polydimethyl siloxane. So one structure called polymer basically.
तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड, इसको तुम लिक्विड as well as gaseous form में it can get converted help of temperature, but during that process इसमें कोई chemical contamination नहीं है, the bonds do not break, so it can convert its state without getting damaged or without getting contaminated, इसलिए इसको हम यूज करते हैं PDMs। डिफ्यूजन पंप में बेसिकली क्या होता है, ये जो अगर तुम्हारा चेम्बर है जहाँ से तुमको एग्जॉस्ट करना है गैस, डिफ्यूजन पंप इसके नीचे ऐसे डिफ्यूजन पंप, इसके नीचे एक हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट does, और यहाँ पे तुम्हारा सिलिकॉन जो पॉलीमर जो भी, so somehow it is being connected such that the silicon oil it goes inside the chamber और वो हर एक गैस मॉलिक्यूल्स को हिट करता है, hits all the gas molecules, तो जितना उसके लिए पॉसिबल है, और तो hits और then it ejects it out. Ejection होता है इसका, and interesting thing is that ये जो सिलिकॉन ऑयल है ये recycled है, there is a cooling system which is was a thinking about it. There is a cooling system, but it does जैसे ही ये गैस बन के and ejected out air molecules, the cooling system again changes from the liquid state again to the from the gaseous state again to the liquid state. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, सिलिकॉन heat, this is heating, forms gas, चेम्बर में गया, मैं फॉर्म चेम्बर में ये इजेक्ट किया एयर मॉलिक्यूल्स को, eject out, and then it is again returning back, so it is undergoing cooling. It's a cooling system. Cool करके it was initially in the liquid state, so it again comes back to the एटम्स, कौन सा एटम गैस मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहा है, इसको हम लोग डिपोजिशन के टाइम पे यूज नहीं कर रहे, डिपोजिशन से पहले यूज कर रहे हैं टू इवैक्यूएट द चेम्बर, उसके बाद हम लोग एटम देना शुरू। ये जो ये दिस आर नॉट एटम, दिस आर द गैस मॉलिक्यूल्स और द एयर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं एटम बोलना चाहता हूँ निकल गया, दिस आर नॉट द एटम्स दैट वी आर टॉकिंग।
So it creates a high vacuum. hp, that is about 10 to the power minus 6 torque. दो पंप हो गया. Next we move on to the next operating system, that is the TMP, turbo molecular pump में you have different layers of blades. अच्छा, उसमें से there are some which are rotating and there are some which are static. Rotate is very high velocity. Say rotating at 90,000 इस range में rotations per minute. 90,000 rotations per very high speed. इसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, विस्कोसिटी में प्लस बना हुआ है. फ्लूइड फ्लो के दो टाइप के विस्कस फ्लो और इज द मॉलिक्यूलर फ्लो. विस्कस फ्लो में एडिसिव प्रॉपर्टीज आर मोर डोमिनेंट, सो यू आर नॉट ट्रीटिंग द मॉलिक्यूल, यू आर ट्रीटिंग द लिक्विड एज एन एडिसिव थिंग, एज इन कॉन्टिन्यूटी. लेकिन मॉलिक्यूलर फ्लो में क्या होता है, यू आर टेकिंग ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एज ए सेपरेट फ्लो. विस्कस फ्लो एंड देयर इज मॉलिक्यूलर. इस सब्जेक्ट को तुम लोग इसको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, नेक्स्ट क्लास में उसको हायर सेमेस्टर में करते हैं. Because you require a lot of understanding. Basically, you are supposed to know fluid mechanics. Okay. So without having all those knowledge, it's difficult. तो ये basically molecular flow में act करता है. Molecular flow मतलब जो rotate कर रहा है, each and every molecule it is rotating. So it is as if एक diagram मैंने share किया था. There are two sets of blades. एक मान लो रोटेटर है, तो मॉलिक्यूल घुसा यहाँ से, मॉलिक्यूल तो मान लो मॉलिक्यूल हैज एंटर्ड, रोटेट कर रहा है. दिस इज अ रोटेटर, आई कॉल इट एज आर. रोटेट करके क्या किया, इसको डिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करते हैं इसको. कर दिया. यहाँ पे मैंने और एक टाइप का ब्लेड रखा है, दैट इज नॉट रोटेटिंग, दैट इज अ स्टैटिक ब्लेड. इट इज एस. ये रोटेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को सिंपली डिफ्लेक्ट करेगा नेक्स्ट रोटेटर. तो यहाँ पे और एक रोटेटर है, वो फिर इसको रोटेट करेगा. तो देयर आर सीरीज ऑफ आर एंड एस, रोटेटर्स एंड स्टैटर्स. When a molecule goes through these series of RNS, ultimately it gets ejected out.
ऐसा करके ईच एंड एवरी सिंगल मॉलिक्यूल को हमको चेम्बर से निकला उसको टू मॉलिकुलर फॉर्म. अच्छा, नाउ यू कैन आस्क मी, पहले वाले केस में यू कुड हैव आस्क्ड मी कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग डिफ्यूजन फॉर्म from directly from the atmosphere because it will get contaminated. और इसके पीछे आंसर है कि so much heat will be generated because there are lot of molecules. Atmospheric ये जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं there are very less number of molecules. तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितने molecules होंगे उसको रोटेशन से निकालने में it will be very huge amount of heat. So that won't be able to, that the system won't be able to. उसके पहले कुछ molecules को हम लोगों ने हटा दिया, हटा कर दिया, then they are so this makes you reach to about ultra high level. That is about minus 9 torr or minus 10. So basically जितना ज़्यादा तुम atoms हो रहे हो, gas molecules निकाल रहे हो, ज़्यादा तुम्हारा less pressure show कर रहा है, इतना ज़्यादा. And lastly we have TSP, titanium sublimation pump, TSP. This means basically it is an alloy of titanium and molybdenum. इसका एक alloy होता है, that is in the form of a filament. इस form में होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं. Heat at very high current. कैसे हीट करते हैं? करंट पास करते हैं of the order of 50 amperes. It's very high. इस लेवल पे हीट से क्या होता है? The solid material done directly with that is called sublimation. Going to the vapor state directly from the solid state is called sublimation. That is sublimation. The titanium is the sublimation. Sublimate क्या करते हैं? They get deposited on the chamber wall. Suppose ये chamber है, sublime होके ये जाके यहाँ पे जाके deposit हो sides. और deposit होने के बाद they react with the gas molecules and form compounds which are at the surface. So basically it is consisting of one oxide to form titanium oxide. इसलिए टाइटेनियम सल्फेशन कॉम्पाउंड यूज करने के बाद इसको हीट करके ये सारे जो डिपॉजिट्स हुए हैं एट द साइड्स इसको मुझे इसको टाइटेनियम सब्लिमेशन फॉर्म. सो इट इज बेस्ड अपॉन सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन. सब्लाइम हुआ, क्या हुआ कि ज़्यादा जो गैस मॉलिक्यूल्स के सबके साथ बॉन्ड फॉर्म करके, तो बॉन्ड फॉर्म करना मतलब क्या है? रिमूविंग द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट एक्जिस्टेड एज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल दैट इट कैन हैम्पर द डिपोजिशन. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया पंपिंग सिस्टम. ये जो हम लोग मेजर करते हैं ना, इतना टॉन है, इतना टॉन है, वो कैसे मेजर करते हैं? हम लोग मेजर
use different types of gauges, gauge, anything to measure. तो इस केस में हम एक गेज यूज करते हैं, इसको कहना होता है पिरानी गेज. Wheatstone Bridge, I think you all know. Wheatstone Bridge. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि Wheatstone Bridge का एक एंड it connect with the filament inside. ये इसको चेम्बर के साइड ले जाते हैं. तो यहाँ पे कैसे फिलामेंट. इसका जो बेसिक जो आइडिया है कि अच्छा कोई भी करंट इस कॉपर वायर से पास हो रहा है, मैं उसका टेम्परेचर उसका बढ़ा दूँ, क्या होगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, है ना. टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस. सो if I am passing heat through this filament, sorry, if I am passing current through this filament, तो उसमें heat generate होगा, delta. अच्छा, now the gas molecules that are present, ये जितने gas molecules यहाँ पे हैं, चलिए, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, जितना हीट जनरेट हुआ है उसको कूल करने की कोशिश करेंगे. सो द बेसिक आइडिया इज जितना ज़्यादा तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल होगा उतना कूल होगा. नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर उतना कम होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना कम होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा. ऐसे बोल सकते हैं कि फिर इज अ लो प्रेशर means less number of gas molecules. Means that temperature is higher. Temperature higher मतलब resistance is also. तो उसको मैं माप सकता हूँ इस Wheatstone Bridge से the voltage change. Or if it is a high pressure, मतलब number of gas molecules is moves, so temperature is low, resistance is high. So this is something Wheatstone Bridge connected है, ठीक है. कितना टाइम हुआ है?